Good morning, all of you. How are you? I hope you all are awesome. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 5 of unit 3. And what is that? States of matter and force. In our previous class, we have discussed about the liquids. We learned about solids and how particles are arranged tightly in solids that give them the definite shape. In our previous class, we have discussed about the solids also. So, today we will see how particles are arranged in the liquids. Means, जो liquids होते हैं उनके अंदर हमारे जो particles हैं वो कैसे arrange होते हैं, किस manner में arrange होते हैं. Okay, so we will do a small activity to show this. You will do this activity yourself. Particle arrangement in liquids. While playing, you will stand like this. Okay? You will hold your hands loosely. Like this, particles of liquids arranged in this manner, they are loosely packed. So, you will do this activity during playing. Okay? This is how the particles are arranged in the liquids. Particles are loosely packed. Okay? Particles are loosely packed in the liquids, and thus liquids can flow freely and take the shape of the container they poured in. Okay? Now you will tell me, how are particles arranged in the liquids? Yes, loosely. And how are the particles arranged in the solids? Tightly. Okay? Is there any space among the particles in the liquids? Yes, there is space. So, they can move freely. But in the solids, there is no space, so that's why they can't move freely. So, that's why they have definite shape. Okay? You will open your SR3 and we will read about the properties of liquids. I'll count down 5 to 1 and you will open your SR3. Okay? 5, 4, 3, 2, 1, 0. I hope you have opened your SR3. Now let's start. Let's start the properties of liquids. Structure of liquids. Matter that does not have a definite shape and takes the shape of the container is called a liquid. Means मैटर की वो स्टेट जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, फिक्स शेप नहीं होती है, उसको हम जिस भी कंटेनर में डालें, जिस भी बर्तन में डालें, वो उसी की शेप ले लेता है. तो बेटा उसकी स्टेट कौन सी होती है? लिक्विड. इन लिक्विड्स देयर इज स्पेस अमंग द पार्टिकल्स. यू कैन सी हियर. यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत सारा स्पेस है. ओके? एज दे आर लूजली पैक्ड, thus due to this loose arrangement of particles, liquids don't have a definite shape and can move freely. और इसकी जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की बेटा वो लूजली होती है, इसीलिए ये इजीली फ्रीली मूव कर पाते हैं. ओके? प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स. लिक्विड्स डोंट हैव अ डेफिनेट शेप. लिक्विड्स के पास डेफिनेट शेप नहीं होती, उनको जिस भी कंटेनर में डालते हैं ये उसी की शेप ले लेते हैं. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर इन. लिक्विड्स फ्लो फ्रीली एंड कैन बी पोर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर. और हम इनको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल सकते हैं. वी कैन सी एंड टच लिक्विड्स. हम लिक्विड्स को भी देख सकते हैं और छू भी सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर टेक्स द शेप ऑफ अ ग्लास बॉल, अ बोतल एज शोन इन द फिगर. यू कैन सी. जो वाटर है वो बोतल में भी है, वो बॉल में भी है एंड ग्लास में भी है. ओके? Now I'll play the CRL and you will watch the CRL carefully. Okay? You will do this activity yourself. Particle arrangement in liquids. First of all, you will draw the pot filled with water as shown above. Okay? Then you will make
a particle. Prepare small particles as shown using the Play-Doh or atta. You can use anything, otherwise you can use बिंदी also, जो आपकी मम्मा लगाती है ना, आप उसको भी यूज कर सकते हो. Now next step is start arranging the particles made in the pot loosely so that there is some space among the particles. अब की बार बेटा हमें particles को loosely paste करना है, ठीक है, ताकि उनके बीच में space रहे. This is how the particle arrangement in a liquid should look like. आपके जो particles हैं वो इस तरीके से दिखने चाहिए. Understand? Thus we see that particles are loosely packed in liquids. It is due to this arrangement of particles that liquids don't have a definite shape. क्योंकि जो liquids के जो particles होते हैं वो loosely packed होते हैं, इसीलिए उनकी एक particular fixed shape नहीं होती है. Okay? We learned that it is the loose arrangement of particles in the liquids, due to which they can flow easily. Let us see whether all the liquids flow in the same way or not. Okay? Take a plate and spoon of honey. आप क्या करेंगे? एक प्लेट लेंगे और एक स्पून लेंगे और उसमें क्या डालेंगे आप? हनी डालेंगे. And start pouring the honey, and after that you will check which one is flow fast, water or honey. Understand? So first of all you will check the water and honey कि कौन सा हमारा fast move करता है. Then you will make a table. Beta, you will draw a table like this. Liquid, how is it flowing? Is it thick or thin? First of all, you will write about honey. Honey is flowing slowly. Understand? And it is thick liquid. But water is flowing fastly and it is thin liquid. So, we observe that some of the liquids such as water flow fast, whereas honey flows slow. The liquids that flow slowly are called thick liquids, whereas liquids that flow fast are called as thin liquids. Understand? Now beta, you will open your worksheet number 4 and you will do question number 2 and 4 in your worksheet just now. I am giving you 5 minutes to complete it. Okay? You can pause this video. I hope you have done question number 2 and question number 4 of worksheet 4. Now let's discuss the answer. Draw how particles are arranged in liquids. You can see the particles are arranged loosely in the glass filled with water and soap solution. You can see the particles. Particles are loosely packed in the liquids. Now next question, write any two properties of liquids. You can write any two properties. Understand? First property, liquids don't have a definite shape. They take the shape of the container they are in. Liquids flow freely. Liquids can be poured from one container to another. जो liquids हैं हम उनको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भी डाल सकते हैं और उनकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है क्योंकि वो कंटेनर के अकॉर्डिंग अपनी शेप को ले लेते हैं जिसके अंदर भी डालते हैं. तो जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है. आई होप यू अंडरस्टैंड. वी सॉ हाउ लिक्विड्स कैन फ्लो ड्यू टू द लूज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड्स. लिक्विड्स दैट कैन फ्लो स्लो आर थिक, whereas liquids that flow fast are thin liquids. जो लिक्विड फास्टली फ्लो करते हैं वो हमारे थिन लिक्विड्स होते हैं और जो लिक्विड्स हमारे स्लोली फ्लो करते हैं तो वो हमारे कौन से होते हैं? थिक लिक्विड्स होते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क. यू विल कंप्लीट वर्कशीट नंबर 5 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.